హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు టిఎఫ్పిసి నేను మీ అంజలి ఎస్ సో ఈ అమ్మాయి మనకి సుపరిచితురాలే చాలా సినిమాల్లో కనిపించింది అండ్ రీసెంట్గా తిరగబడరా స్వామి అంటూ మన ముందుకు వచ్చారు అండ్ అలాగే బిగ్ బాస్ సీజన్ 17 మనకి బాలీవుడ్లో కూడా అక్క చాలా 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 ఫేమస్ అనమాట. సో రైట్ నో మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడతో మాట్లాడి చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ మనరాజీ, నమస్తే. నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సూపర్. ఆవిడ బాగున్నాను అని చెప్తూ బాగున్నారా అని అడుగుతున్నారు. నేను కూడా చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పటి వరకు క్యూట్ గా కనిపించే మీరు ఎక్దమ్ సే మాస్ మసాలా క్యారెక్టర్ చేశారు. సో వెన్ యూ లిసన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం యువర్ క్యారెక్టర్, మీకు బాగా ఎగ్జైట్ ఫీల్ అయిన పాయింట్ ఏంటి? The exciting point was that ऐसा कैरेक्टर तो पहले कभी किया नहीं है, एक वो पॉइंट था. दूसरा पॉइंट था कि एक सोलो सॉन्ग है तो एक वो भी कैरेक्टर के थ्रू ही जा रहा है. तो ऐसा नहीं कि एक आइटम सॉन्ग है और समथिंग, एक कैरेक्टर का सॉन्ग है, उस कैरेक्टर में आप जान डाल रहे हो उस गाने से. तो और डांस करने का मौका मिल रहा है अकेले, तो मतलब जो कोरियोग्राफर स्टेप सिखा रहे हैं आप सेम टू सेम करने वाले हो, कुछ चेंज नहीं होने वाला. ओके, अदरवाइज आप को स्टार्स के साथ काम करते हो तो कुछ कभी उनको चेंज चाहिए, कभी हमको चेंज चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए. ये तो सोलो का हिसाब था, सो इट वाज द बेस्ट थिंग. ओके. And इसके अलावा third thing was I was getting to work with the best people in the industry, and also if I talk about Bollywood, so I was getting to work with Makran Deshpande sir. तो जब मैं बॉम्बे आई थी तो मैं बहुत पृथ्वी थिएटर जाती थी जी. तो मैं उनके प्लेस देखती थी और मन करता था कि बोलूँ सर मेरे को भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ना, बट ऑब्वियसली बहुत शर्म आती है जब आप नए इंडस्ट्री में आते हो. ओके. तो यहाँ तो आपको सीधा चांस मिल रहा है काम करने का, तो यू शुड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. సో మనరాజీ అంటే లైక్ మీ ఫస్ట్ మూవీ జిద్ కదా, జిద్ వాస్ yes. సో అందులో కూడా లైట్ గా కొంచెం నెగటివ్ షేడ్స్ అనేవి ఫస్ట్ కనిపిస్తాయి. Yes. ఎండ్ వచ్చేసరికి యు ఆర్ ద అంటే లైక్ ఏం తెలియని ఒక అమాయకురాలుగా బయటపడతారు. కాబట్టి అంటే లైక్ అది చేసినప్పుడు ఎంత కష్టపడ్డారో, ఈ మూవీకి పర్టికులర్ గా ఏం హోంవర్క్స్ చేశారు? ఫర్ తిరగబడరా స్వామి మీ క్యారెక్టర్ కి ఏం హోంవర్క్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద హోంవర్క్ యూ డిడ్ ఫర్ యువర్ క్యారెక్టర్? So the character demanded me to be very serious, very authoritative. And in personal life, I'm just not authoritative. If somebody shouts also, I'm like, अरे क्या बोल दिया? हाँ, we know बिग बॉस में कभी देखते हैं हम. Okay. तो बहुत कम, बट ये कैरेक्टर बहुत अथॉरिटेटिव था, सब कुछ था. और ऐसा कैरेक्टर कहीं ना कहीं जिद का भी एक्सटेंशन था. तो आई थिंक एज एन एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग रोल्स में अपने आप को देखना. और बस मैं चली जाती हूँ, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करती किसी भी रोल के लिए. आई थिंक मैं अगर किसी ने बोला आपको बहुत कॉमेडी रोल करना है, तो मुझे पता है कि उस रोल को करने के लिए आई स्टार्ट लिविंग दैट कैरेक्टर लाइक दैट. मेथड एक्टिंग कह लो. और कई बार ऐसा भी होता है 2-3 प्रोजेक्ट्स आप साथ कर रहे हो तो यू जस्ट गो विद द फ्लो, व्हिच डायरेक्टर व्हाट डायरेक्टर वांट्स व्हाट, एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड डिलीवर इट. Okay. तो इतना बर्डन नहीं लेती मैं अपने ऊपर. I like to keep things easy breezy. और ये कैरेक्टर में तो it was all about performance. It was all about your expressions, Okay. your dialogues, your dance, your energy, your aggression. तो ये आपको मोटा मोटा 3-4 पॉइंट्स पता होता है कि ये चीजें आपकी करेक्ट होनी चाहिए. बाकी तो आई थिंक सेट पे सब हो ही जाता है. బేసికల్ గా అంటే తెలుగు సినిమాల్లో తెలుగు రాని వాళ్ళు వచ్చారు చేశారు. మీరు ఆల్రెడీ తెలుగు సినిమాలు చేశారు, 6th one or 7th one. సో మీకు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావచ్చు, కొన్ని ఎమోషన్స్ కావచ్చు బాగా అర్థమవుతాయి. ఏ సినిమా చేసినప్పుడు ఒక ఎమోషన్ చెప్తే మీకు అర్థం కాకుండా వేరే ఎమోషన్ తో చేసిన సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Did you ever that by miss chance वो एक बोले आप एक किए, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा तो एक्चुअली जब मैं फर्स्ट डे शूट पे गई थी तो आई थिंक मेरा फर्स्ट शॉट ही राज तरुण और मकरन देशपांडे सर के साथ था. फर्स्ट डे तो आई वाज वेयरिंग सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स जो मुझे लग रहा था कि यार ये कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, ऊम्फ फैक्टर ना दिखे. बिकॉज मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाना था कि बहुत ऊम्फी लग रही है ये. बिकॉज एक डिसेंट भी रहना चाहिए बट एक अच्छा कैरेक्टर, या वो वो ऐसे उसको किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, मुझे वैसा नहीं चाहिए था. मुझे चाहिए था कि एक पावर दिखे कि
ये इंसान कितनी, दिस वुमन इज सो पावरफुल. तो आई थिंक मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे. एंड देयर मकरन सर वाज देयर, एंड ऑफ कोर्स वो इतने स्टूडेंट्स को देख चुके हैं इंडस्ट्री में, स्टूडेंट्स ही बोल सकती हूँ बिकॉज वो वर्कशॉप्स भी लेते हैं. तो उन्होंने एकदम मेरे इस इनहिबिशन को पकड़ा और उन्होंने वहीं पे बातों बातों में मुझे समझाया, मुझे करेक्ट किया. एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब जो मेरे माइंड में डाउट्स थे मैंने तो बोला भी नहीं, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप मिले हो, आप थोड़ी शर्म भी आएगी, यू नो, आप डायरेक्टर खड़े हैं, प्रोड्यूसर खड़े हैं, एक्टर्स खड़े हैं. बट ही जस्ट क्लैरिफाइड इट एंड आई वाज बैंग ऑन देयर फ्रॉम द नेक्स्ट डे. By the next day, by afternoon, I got a applause from all the cast and crew that wow, what a performance. Wow. And they all loved my, like one day Raj Tarun actually called me and he's like that, you know, I don't know Manara, the whole production house, they see a song, they were going gaga about it. I'm like, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया गाना? थिएटर्स में देखने वाले को पता है आप क्या किया. Because with me another thing is कि मैं जब शॉर्ट्स देती हूँ तो उसके बाद मैं जाके कैमरा में नहीं देखती कि मैंने क्या परफॉर्मेंस दिया something. Until somebody tells me come watch your scene. I'm not that kind of a person जो बार बार मेरा फ्रेम में मैं कैसे दिख रही हूँ. I'm not that kind of a person. Okay. So मैंने तो बस सीन्स दिए, बहुत कम देखे. मोस्टली एक्शन सीन्स है तो सब वहां पे दिखते ही हैं सीन्स, तो मेरे को लगता है नहीं सब देखो, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन. तो जो भी है स्क्रीन पे ही देखा मैंने, और गाना तो मैंने देखा ही था. एंड बस ऐसी ही जर्नी रहा एंड पीपल आर लाइकिंग माई वर्क. तो आई थिंक सबसे बड़ा एक एक्टर के लिए होता है अगर लोग आपका काम पसंद करते हैं, तो इसमें तो वो हुआ है. सो आई एम ब्लेस्ड. ओके, डन डन. एंड पहले से ही आप, यू आर वेरी क्यूट एंड आप सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हो. कैसे मैनेज करते हो? हम लोग है कि मतलब मैं पर डे 2-3 तो मतलब पोस्ट रखने के लिए बहुत मुश्किल से रखती हूँ. मैं 2-3 दिन के बाद रखती हूँ, बट यू आर वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. कैसे मेंटेन करते हो आप? सोशल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, आई थिंक एक पूरा टीम वर्क होता है. बट ऑल्सो आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन, बट मेरे फैंस का प्यार इतना है और मुझे वो रोज देखना चाहते हैं. ट्रू ट्रू. तो नहीं तो वो सब मतलब कहाँ कहाँ से किस किस को मैसेजेस पहुंचे थे, मनारा को बोलो पोस्ट करें, मनारा को बोलो पोस्ट करें, मनारा. उनको चाहिए कि वो क्या कर रही है, उनको जानना है. और इसलिए आई थिंक वो ऑडियंस का प्यार रहता है, प्लस फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स रहती है, कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, कोई प्रमोशन, म्यूजिक का कुछ ना कुछ, लाइक समथिंग और द अदर कीप्स गोइंग. तो आई थिंक इसलिए मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखती हूँ. एंड आई थिंक मुझसे ज्यादा मेरे फैन पेजेस बहुत मुझे प्यार करते हैं, वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं. ट्रू. मैं रिसेंट में एक वीडियो देखी आपका, आई थिंक पटाया पे गए थे. हाँ. मनारा आया है, यहाँ पे कोई मनारा को पटाया ही नहीं. मैं देख रही हूँ, अरे बाप रे, यार लाइक मतलब ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो कि मतलब बहुत फ्रेंडली बात करते हैं, ऐसे बहुत कम रहते हैं. वैसे टॉलीवुड में आपका फ्रेंड जोनर में कोई है फ्रॉम टॉलीवुड? From Tollywood, I just know people from the industry, and I just meet them, and I meet everyone with a lot of love. गर्ल्स होती हैं, कई मिल जाती हैं, जोक शेयर होते हैं, फन करते हैं. आई थिंक देयर आर सम अमेजिंग एक्टर्स हियर, और मेरी तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग है. मेरा यहाँ पे किसी से कुछ ऐसा नहीं आ रहा, दिस मनारा इज लाइक दैट, दिस मनारा इज लाइक दैट. सो आई रियली, इनफैक्ट कल मैं फिल्म फेयर के लिए गई तो सब मिले, सबने बोला, किसी ने बोला अरे तुम्हारा बिग बॉस देखा बहुत मजा आया, किसी ने बोला अरे तुम्हारी नई फिल्म रिलीज हुई बहुत मजा आया. सो दीज जोक्स एंड एवरीथिंग, एंड पूरी इंडस्ट्री, they know me, they know my mother. So everybody gives a lot of respect, a lot of love. कैसे हो मनारा? So कुछ ऐसा one particular favorite तो नहीं है, और वैसे भी one particular favorite का नाम नहीं लेना चाहिए, एक स्कैंडल बन जाता है. ओके. सो अभी मैं पूछने वाली हूँ मनारा जी को, तो పూజో ఇప్పటి వరకు మీరు కొంతమంది హీరోస్ తో వర్క్ చేశారు. yes, బట్ ఏ హీరోతో కలిసి వర్క్ చేయాలని ఉంది? Which hero I want to work with? In Telugu film industry, there are so many amazing actors, but I think actually सभी बहुत अच्छे actors हैं, but I think I would love to work with Chiranjeevi sir and all the actors in his family. చిరంజీవి గారు మొత్తం మెగా ఫ్యామిలీ మొత్తం. Yes. సూపర్. Smart answer था? స్మార్ట్. మళ్ళీ दिल से बोला. దిల్ సే, బట్ మేము మళ్ళీ చిక్కు వేస్తాం కదా. సో ఐ విల్ గివ్ యూ త్రీ క్యారెక్టర్స్.
సో మెగా ఫ్యామిలీలో హీరోస్ పేర్లు కూడా చెప్తాను, ఎవరితో ఏ క్యారెక్టర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, Okay. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లవర్. Lover? लवर कैरेक्टर. So which hero? I will tell you hero names also. मैं आपको हीरो नेम्स बताऊंगी. I have to do casting basically. Yes. Guys, I'm doing casting. Okay, The first casting director in Tollywood. I probably am the one. I'm very good at casting. I got a lot of my friends are casting करवाया है मैंने बॉम्बे में. अच्छा, आपका नंबर अर्जेंट है తీసుకుందాం మనకి ఎప్పుడైనా అవసరం You అయితే. can hire me, but it's a paid thing. Okay, done. So first one is lover and second one is wife and third one is sister. Okay. Okay, done. రామ్ చరణ్ గారు, బన్నీ గారు అండ్ మెగా ఫ్యామిలీలో ఇంకెవరున్నారు? రామ్ చరణ్ గారు, బన్నీ గారు, వరుణ్ తేజ్ గారు. How can they be sister and wife? मुझे समझा नहीं. ये 3 हीरोज है, ये 3 कैरेक्टर्स है. आपको किसके साथ कौन सा कैरेक्टर करना है बोलना है आपको. Okay, रामचरण sir. बन्नी गारू, अल्लू अर्जुन गारू एंड वरुण तेज गारू. Okay. Done. इन तीनों को आप मैं 3 कैरेक्टर्स बोली ना, लवर, वाइफ एंड सिस्टर. किसके साथ Oh my लवर करना God. है, किसके साथ वाइफ करना है, किसके साथ सिस्टर. Interesting, very interesting. Okay, lover will be Varun Tej. Okay. Okay, and wife can be with Ram Charan sir and Allu Arjun sir, and sister could be like something like which was done in Josh. तो मेरे को acceptable है. इधर क्यों? Then it could be any of the 3. Any of the 3. हाँ, but it has to be something like Josh. Okay, Josh. That Shah Rukh Khan and Aishwarya Rai's film. Then it's acceptable. అక్కకి చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. Of course. తెలుగు డైలాగ్స్ ఏమైనా వచ్చా? డూ యు నో ఎనీ డైలాగ్? If you say, I say. అవునా? Yeah, because honestly, in recent times, if you ask me whether it's Bombay or in Telugu film fraternity, I've not seen anything. Okay. Because I went inside the house and मैं तो last day तक रह के आई और उसके बाद इतना काम और इतना सब कुछ हो रहा था लाइफ में और अपना शो भी देखना था मुझे. So I've not really seen. जो भी मैं films देख रही हूँ फिलहाल तो screenings पे देख लेती हूँ or something. So yeah, if you tell me a dialogue, I'll say it. So do you know బాలయ్య బాబు? नो, चलो బాలయ్య బాబు గారి డైలాగే చెప్పిద్దాం. Okay. मैं बोलती हूँ, आप बोल दीजिए. ठीक है? చూడు, చూడు, ఒకవైపే చూడు, ఒకవైపే చూడు, మరోవైపు మరోవైపు చూడాలనుకోకు, అనుకోలు, చూడాలి చూడాలి అనుకోకు, చూడాలి అనుకోకు, మాడిపోతావు. మాడిపోతావు. Okay, done. Is there any dream characters of Manara? I definitely, I just love films like Queen. I love films like Jab We Met. I think they are very empowering to women. Okay. And they just take out the best of you. I also love Jaane Tu Ya Jaane Na in Hindi. Yeah. So these are the films character which I currently want to play because I think these are the extension of my personality in Bigg Boss and people loved me there for my happy go lucky nature. And जो भी मैंने reels पे अपने आप को देखा मुझे तो पता भी नहीं था हम घर के अंदर क्या कर रहे हैं, but ऐसा कुछ आया तो I think कुछ ऐसा आता है तो people would love to see me in those kind of roles. Okay. So मतलब బిగ్ బాస్ హౌస్ కి జానే की वजह से हो या फिर అంటే లైక్ మీరు ఏదైనా రీజన్ వల్ల తెలుగులో ఏదైనా ఆపర్చునిటీ మిస్ చేసుకున్నారా? Do you ever miss any opportunity from Tollywood industry due to dates or due to any other Yes, reasons? I have. In past, I have missed opportunities because of dates and everything. But I think अभी Big Boss में जाने के बाद कुछ ऐसा I don't know कि opportunity miss हुआ or something because I always feel opportunity loss is equal to an opportunity gain. And the gain was the immense love from people. Like it's that kind of love कि अगर मैं थोड़ा भी ऐसे हूँ तो लोगों को पता चल जाता है. They send gifts and everything to my house, make me feel so loved and you know everything. And now everybody like industry as Bollywood, they have come so close to me because they love me, you know, like if I'm meeting them, they know how I am, like the biggest of the stars. Like everybody will say they don't watch Bigg Boss, but I think everybody watches Bigg Boss. So I think the love and appreciation, they know my nature now. So I think
there's nothing like a loss in life. It's always a gain. ఓకే సో యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్. మాకు కూడా ఇక్కడ బిగ్ బాస్ సీజన్ 8 స్టార్ట్ అవబోతుంది. Oh, really? Wow. Where is the set for this? In Hyderabad or in Bombay? హైదరాబాద్. Oh, lovely. యా Okay. సో హోస్ట్ చేసేది కూడా కింగ్ నాగార్జున గారు. Yes. ఎస్ సో మీకు తెలుగులో అవకాశం వస్తే వెళ్తారా బిగ్ బాస్ కి? ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఇన్ తెలుగు బిగ్ బాస్, విల్ యూ గో? I would love to host a segment there. ఓకే If there's a segment, like a fun segment, Vibe with Manara segment, I would love to do that. And I have met Nag sir quite some time back. And I have immense respect for sir. And I think the words he chooses to get that interaction with the other person are phenomenal, are very mesmerizing, and are very on point and knowledgeable. And the way he conducts himself with immense amount of grace is Okay. beautiful to look at, and something which we all as human beings must imbibe. ఓకే బట్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ ఇన్ తెలుగు బిగ్ బాస్ హౌస్ యాజ్ అ కంటెస్టెంట్, अरे क्या करना है अंदर मेरे को? मैं आगे go as a क्या guest. सिर्फ एंटरटेनमेंट बॉलीवुड वालों को ही तेलुगु वालों को आप नहीं देंगे? Oh my God, फिर अंदर जाके सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे मेरे आसपास बैठे होंगे कि चलो मनारो को पहले हम अच्छे से तेलुगु में बातें सिखाते हैं. फिर बिग बॉस ही प्यार में फंस जाए आपके प्यार Oh में. my God. अरे अरे ब्लश कर रहे हैं. ओके बिग बॉस का प्यार, oh my God, yeah. बिग बॉस की तो एक ही दोस्त थी पूरे सीजन से, that was मनारा. वो तो है ही. So- Done. సో బయోపిక్స్ కా జమానా నడుస్తుంది కాబట్టి మీకు మిమ్మల్ని ఎవరి బయోపిక్ లో చూసుకోవాలని ఉంది? I think अगर सानिया मिर्जा की बायोपिक बनेगी तो मैं परफेक्ट कास्ट हूँ. हाँ ये तो सही है. है ना? देखो पक्का. बोल दिया मैंने, बिल्कुल ऑन पॉइंट. ఈవిడికి తెలియని పాయింట్ ఇంకోటి ఏదో ఉన్నట్టుంది. ఓకే సో వర్కింగ్ విత్ రాజ్ తరుణ్ గారు ఎలా అనిపించింది? How was It was really nice to work with him. He's a very happy-go-lucky person. In fact, बहुत साल पहले we were to do a project together, but one of my friend was only making it, but it got shelved. Oh. And this opportunity happened like this, and he's definitely a laughter-roid on set. After Big Boss also, he called and congratulated me, and he was very happy, and he was telling me about the film and everything, because they wrapped up after I went inside the house. Pura shooting to tab khatam hua hoga, and he was very happy, very excited. How was it? How was Manara? How was your Big Boss? So all of that. So, and I had a good time. I usually have a good time shooting with all my co-stars, and I like that lively kind of environment. I think मेरे पूरे करियर में सिर्फ एक ही फिल्म थी जिसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. Otherwise, all my experiences in the Indian film industry has been really nice. Okay, done. So finally, हो गया मूवी के बारे में. Just I will ask some questions. You have to give me one word answers. Yeah. Done. So Manara's and like which kind of a person? Introvert or an extrovert? Extrovert now, introvert before Big Boss. Oh, after Big Boss, extrovert. Okay. So Manara's first income or remuneration as an artist? I got my first stipend when I was working as I was doing my internship as a designer, was 5,500 rupees. TDS काट के 4,800 something आया था. Apart from artist and actress, और कुछ करना चाहते हो आप? Direction, DOP, writing, or what genre you want to do? I think I'll be very good as a producer. Producer. Yes. Okay. So I think I'll be very good. I understand the value for money. I understand how to execute things. So I think, yeah. If you are a producer of a movie, then you have to cast from a Bollywood and a Tollywood multi-starrer movie. So who is the both of them? From Bollywood and Tollywood. I will cast myself first. Okay, done. Because मैं पक्का हिट कोशेंट हूँ. वो तो ठीक मुझे है. पता चला होगी अच्छे Okay, से. done. आपके बाद दो लोगों को from Bollywood and Tollywood. Bollywood Salman sir. Salman sir. Okay, done. Done. Sir from- आप आ रहे हैं ना? From Tollywood. Tollywood, I really like Chiranjeevi sir. And yeah. वो दोनों ऑलरेडी कर चुके हैं. तो मैंने मेरे साथ में किया ना. तो आप तीनों का. हाँ मेरे लिए भी करो. Okay, okay, done. So Manara is a night person or a day person? I am very flexible that way. मुझे आप सुबह 8 बजे उठा सकते हो
और पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटे की नैप दे दो एंड देन आई कैन बी अवेक टिल मॉर्निंग. Reactive. चाबी घूम जाता है. Okay. So I'm very active that way. It doesn't matter if I'm shooting in the day or I'm shooting in the night or I'm awake in the night or day में भी I'm जागी हूँ, कोई problem नहीं है. Okay. So but हाँ, I don't like sitting. मुझे तो नहीं पसंद. अगर कुछ नहीं है तो मैं सो जाती हूँ. Otherwise I'm very active work wise. Okay. Yeah. So Manara's favorite brand in clothing. In clothing, I love a lot of international brands though. Okay. Like House of CB is something I really like. I wear a lot of dresses from House of CB. BCBG is my to-go brand. I love shoes and all from Michael Kors. I think they give really nice boots. I always, whenever I'm traveling overseas, I buy ton of boots from different brands. So yeah, brands की तो बात मत करो, मेरी बहुत लंबी लिस्ट है. Okay, done. So Manara गिफ्ट्स खरीदती है, मतलब कुछ खरीदेगी तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट शी इज नॉट यूजिंग एनी रिग्रेट्स बाय बाइंग गिफ्ट्स और बाइंग थिंग्स. So with me, recently I've understood about myself. I've been traveling so much and I only have one hobby, which is shopping. So and I keep buying so many things कि मुझे घर आके भूल जाता है मैंने क्या क्या खरीदा है. Okay. Yeah, and I also buy a lot of gifts for my friends. Okay. तो गिफ्टिंग इज समथिंग विच गोज विद मी. फ्रेंड्स, अच्छा ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, इसके लिए लेना, इसके लिए लेना. आई लव टू शॉप फॉर माई फ्रेंड्स ऑल्सो. उनका सामान I'll be fasted, send it somehow. अपना सामान जो मैं खरीदती हूँ भूल जाती हूँ. I think I should stop shopping now and look कि मेरी अलमारी के अंदर क्या है. Okay, done. So Manara's favorite food क्या है in Hyderabad? In Hyderabad, now I like plain dosa and chai. Plain dosa and chai. Yes. Manara को कुक करना आता है? मैंने बिग बॉस में तो बहुत कुकिंग करा था, पर बाहर आके सब भूल गए. ఇదేందా ఇది అక్కడ మాట చేసి ఇక్కడ మర్చిపోయాను. I think I was a very nice girl inside the house and अभी सब भूल गया. बट अगर कुछ होगा तो if my friends are coming they'll be like cook तो मैं कर लूंगी. हाँ ठीक है मैं कर देती हूँ कुक. बट उस टाइम मैंने बहुत कुक किया था, पता नहीं कैसे मेरे अंदर वो जोश आ गया था where I wanted to cook and I was enjoying cooking for 17-18 people. इतना खाना बनाना. Okay. तो I don't know कैसे, और मैंने खाना जलाया भी नहीं था. बट अब बाहर आके I only tell my chef ये बना दे वो बना दे. आपकी मम्मी सोच रही है घर पे एक काम भी नहीं करती थी, वो बोलती है तूने वहां पे तो बड़ी तो तमीज में थी. She tells him. I'm like तमीज में थी मतलब बदतमीजियां थोड़ी दिखाऊंगी. अच्छा बट अभी आई थिंक घर पे you don't even remember when you have to eat. So वो आ जाता है सामने तो you eat. Okay, done. So finally Telugu upcoming projects ఏమని చేస్తున్నారు? So not in Telugu but you will see me in Hindi. Now you have more of my music albums coming. You have more of my web coming. In fact Hyderabad तो मैं खुद इतने टाइम बाद आ रही हूँ. I have no idea about what is happening. Here this was just a film जो which needed the promotion. So I'm here but I'm going back to Bombay. So if there'll be something in the future in Telugu, I will definitely be coming back for the promotions. We are waiting. So looking forward. Fingers crossed. Thank you Thank you so much. Thank you for the love. Thank you and all the best for your future projects. Thank you dear. Thank you. సో అది సంగతి అనమాట. మన మనారాతో బోల్డ్ అని ముచ్చట్లు అయిపోయాయి కాబట్టి ఇంకొక ఇంటర్వ్యూతో డెఫినెట్లీ మీ ముందుకు వస్తాను. అప్పటి వరకు కీప్ వాచింగ్ TFC. టాటా బై బై, సైనింగ్ ఆఫ్.